Renaissance period. This period starts from 1500 to 1660. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्यूडोर पीरियड के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज की, जो कि फर्स्ट पार्ट है रेनेसां पीरियड का। लेट्स स्टार्ट विद द हुक पॉइंट ऑफ दिस एरा। हेनरी हॉवर्ड, who was the Earl of Surrey in 1516 to 47. He was the first person who introduced the sonnets from Italy to England in early 16th century. The Elizabethan age. This age is the time period associated with the reign of Queen Elizabeth from 1558 to 1603 and is often considered to be a golden age in English history. It was an age considered to be the height of English Renaissance and saw the full flowering of English literature and English poetry. In Elizabethan theatre, William Shakespeare, among others, composed and staged plays in a variety of settings that broke away from England's poet styles of plays. It was an age of expansion and exploration abroad, while at home the Protestant Reformation was established and successfully defended against the Catholic powers in the continent. The Elizabethan age is viewed so highly because of the contrast with the periods before and after. It was a brief period of largely internal between the English Reformation, with the battles between the Protestants and Catholics, and the battles between Parliament and the monarchy that would be engulf the 17th century. The Protestant-Catholic divide was settled for a time by the Elizabethan religious settlement, and Parliament was still not strong enough to challenge royal absolutism. The Elizabethan era also saw England begin to play a leading role in slave trade, and saw a series of bloody English military campaigns in still Catholic Ireland, notably the Demoslan rebellions and the 9-Year War. Now let's study about some poets and their works in this era. Edmund Spenser, from 1552 to 1599. He wrote the Shepherd's Calendar in 1579, The Fairy Queen in 1590 to 1596. In 2 years he completed this work, and this work was epic poem. This was written in 12 books, and this was epithalamion. The view of present state of Ireland. This was a prose. Sir Philip Sidney, from 1554 to 1586. He wrote The Countess of Pembroke's Arcadia in 1590. Astrophel and Stella in 1591, An Apology for Poetry, also known as A Defense of Poesy and Defense of Poetry in 1595. Thomas Kyde, from 1557 to 94, he wrote The Spanish Tragedy. It was a revenge play. Christopher Marlowe,
From 1564 to 1593, he started writing in blank verse. His works were Tamburlaine in 1590, The Masquerade at Paris in 1593, Dido, Queen of Carthage in 1594, Edward II in 1594, Dr. Faustus in 1604, and The Jew of Malta 1633. His poetries were: he translated the books of one of Lucan's Pharsalia, translation of book Ovid's Elegies in 1580, The Passionate Shepherds to His Love, Hero and Leander in 1593. This work was incomplete and completed by George Chapman in 1598. George Chapman, from 1559 to 1634. His works were The Shadow of Night in 1594, Ovid's Banquet of Sense 1595, The Blind Beggar of Alexander 1596, A Humorous Day's Mirth 1597, All Fools 1605, Business Day Amboise 1607, The Revenge of Bussy d'Amboise in 1610, The Ideals of Hammer in 1611, Castles and Pompey 1613, The Whole Works of Hammer 1616, The Crown of all Hammer's Works in 1624. Thomas Heywood, from 1570 to 1641. A Woman Killed with Kindness in 1602 to 3. An Apology for Actors, containing 3 brief treatises in 1612. The Royal Kings and the Royal Subjects in 1615 to 18. The English Travellers in 1623. A Maiden Headwell Lost in 1634. A Challenge for Beauty in 1636. Love Matrice or the Queen's Mosque in 1636. Ben Jonson's, from 1572 to 1637. His comedy works were like A Tale of Tub in 1596, The Isle of Dogs in 1597, Every Man in His Humour 1598, Every Man Out of His Humour 1599, Synthetic Rebels in 1600, The Poetaster in 1601, and Eastward Ho in 1605. The Silent Women in 1609, Epicoene and Volpone in 1606, The Alchemist in 1610, Bartholomew Fair in 1614. His tragedy works like Sejanus in 1603, Catiline in 1611. His Mosque's works, The Coronation Trump or The King's Entertainment in 1604, The Masque of Beauty 1608, The Hue and Cry After Cupid or The Masque at the Lord Had Night, Marriage in 1608, The King's Entertainment and
Welbeck in Nottinghamshire in 1633. Love's Welcomes at Bolsover in 1634. Thomas Dekker from 1572 to 1633. He wrote Old Fortunates or Fortunatus in 1599, The Shoemaker Holiday in 1599, The Honest Whore in 1604, The Wonderful Year in 1603, The Seven Deadly Sins of London in 1606. यहाँ पर दो राइटर्स हैं, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर। ब्यूमॉन्ट के वर्क्स कुछ इस तरह हैं: Thermesis and Hermaphroditus in 1602, The Women Hater in 1605, The Mosque of the Inner Temple and Grey Inn in 1612. Fletcher's works: The Faithful Shepherdess in 1609, The Tragedy of Valentinian in 1610-14, The Women's Prize or The Tamer Tamed in 1610, The Mad Lover in 1616, The Wild Goose Chase in 1621, Rule a Wife and Have a Wife in 1624. Both's work in contributions. ये जो वर्क्स अब मैं बताने जा रही हूँ, ये वो वर्क्स हैं जो इन दोनों ने मिलकर लिखे थे। Flaster or Love Lies a Bleeding in 1610, The Coxcomb or The Coxcomb in 1608 to 1610, The Maid's Tragedy in 1610, The Captain in 1609 to 12, A King and No King in 1611, Cupid's Revenge in 1611, The Noble Gentleman in 1613, Love's Pilgrimage in 1615, and The Scornful Lady in 1616. Now, Francis Bacon from 1561 to 1626. His works were Essays 1597, The Elements of the Common Law of England, The Proficiency and Advancement of Learning in 1605, The Wisdom of the Ancients in 1619, Novum Organum in 1620, The History of Reign of King Henry VII in 1612, The History of Wines or The History of Winds in 1622, The New Alentes in 1626. William Shakespeare 1564 to 1616. ये इस टाइम के बहुत ही प्रख्यात राइटर थे और इन्होंने शुरुआत की थी प्रॉब्लम प्लेज की. His comedy works or comedy plays were like All's Well Then Ends Well. This was a particular problem play. The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, The Merchant of Venice, Taming of a Shrew, Twelfth Night, The Merry Wives of Windsor, The Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, The Two Gentlemen of Verona,
The Winter's Tale, As You Like It, Cymbeline, Measures of Measures. This was also a problem play. The Tempest. His tragedy works were Romeo and Juliet, King Lear, The Tragedy of Julius Caesar. This was a Roman play. The Life of Timon and Athens, The History of Troxylus and Cressida. This was also a problem play. Othello, Antony and Cleopatra. This was a Roman play. Cymbeline, Macbeth, Hamlet, Titus, and Coriolanus. This was a Roman play. His historical works were King John, Henry IV Part Second and Third, Edward III, Henry Fifth, Richard III, Richard III's war tragedy play, Richard II, Henry VI Part One and Second, Henry IV Part One, Henry VIII. His poems were Venus and Adonis in 1593, Rape of Lucrece in 1594, Shakespeare's Sonnets in 1594, Passionate Pilgrimage, Phoenix and the Turtle in 1601, Lover's Complaint in 1609. Shakespeare wrote 154 sonnets and his first collection play was called First Folio. 154 sonnets. WH इसमें जो थे वो 126 थे और जो डार्क लेडी के थे वो 28 सॉनेट्स थे। अब तक हमने पढ़ा जो एलिजाबेथन टाइम में जो चीज़ें हुई, जो बेसिक पॉइंट्स थे और जो इम्पोर्टेंट राइट्स और राइटर्स थे उनके बारे में। अब एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन इस टाइम की मैंने एक जगह पे सम अप करी है, कोशिश की है कि आपको एक जगह पे उन सबको एक साथ रखकर समझाने में सफल रहूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक सेक्शन है पोइट्स का, एक सेक्शन है ड्रामेटिस्ट का, एक है प्रोज राइटर्स का और एक अलग सेक्शन है यूनिवर्सिटी विट्स का। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। शुरुआत करते हैं पोइट्स से। पोइट्स थे थॉमस सेक्विले, थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज गैस्कॉनेजन, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वाइट, हेनरी हॉवर्ड, सर फिलिप, सिडनी सिरमिलन, डेनियल मिशेल एंड ड्राइटन। ड्रामेटिस्ट थे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, फ्रांसिस बियमोंट, फिलिप मैसेंजर, शिरले, जॉन मार्स्टन, थॉमस हेवर्ड एंड थॉमस डिकर। प्रोज राइटर्स थे सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, रिलीजन, हुकर, विलियम वेब। एंड यूनिवर्सिटी विट्स में थे जॉन लिली, थॉमस काइट, जॉर्ज पील, थॉमस लॉर्ड्स, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश। यूनिवर्सिटी विट्स के जो जॉन लिली हैं ये इन्फ्लुएंस्ड थे शेक्सपियर से और इन्होंने सब कुछ लिखा था, मतलब हर चीज़ के बारे में लिखा था, चाहे वो फेयर के बारे में हो, चाहे वो प्यार के बारे में हो, चाहे वो लड़ाइयों के बारे में हो। जो रॉबर्ट ग्रीन थे उन्होंने ज़्यादातर अपने वर्क्स में अटैक किया था शेक्सपियर पर, और जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो ड्रामेटिस्ट भी थे और इन्फ्लुएंस्ड थे शेक्सपियर से, और ये ज़्यादातर मोरालिटी प्लेज लिखते थे या ट्रेजेडी प्लेज लिखते थे। प्रोज वाले सेक्शन में जो सर फिलिप सिडनी है
ये ज्यादातर ड्रामास लिखते थे और ये सोनेट्स में लिखते थे। ड्रामेटिस्ट का जो सेक्शन है उस पे ध्यान दीजिएगा। जो विलियम शेक्सपियर थे और जो बेन जॉनसन्स थे, इनके जो राइट्स होते थे उनमें वैरायटीज होती थी, हिस्ट्री की, कॉमेडी की, ट्रेजिडीज की और ट्रेजिक कॉमेडीज की और रोमांस की। एट लास्ट जो थॉमस डेकर थे, उनका एक खास वर्क था द शो मेकर। वो बहुत ही फेमस वर्क था और उनके जो प्लेस होते थे ज्यादातर वो रियलिस्टिक प्लेस होते थे और पुअर पीपल पे होते थे। पोइट्स के सेक्शन पे देखेंगे तो जो हेनरी हॉवर्ड हैं, उन्होंने सबसे पहले सोनेट्स को लिखा था। सो दिस वॉज ऑल फॉर एलिजाबेथन एरा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कमी लगी हो तो वो भी बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा। आपके लाइक्स, सब्सक्राइब्स मुझे हेल्प करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके लिए और ऐसी नॉलेजेबल थिंग्स को, कंटेंट को एक साथ एक जगह पे लाकर आप तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।